words, no words. Thoughts, or thoughtlessness. Everything comes from the space of silence. And this silence is not inert silence. But it's the silence that is filled with wisdom. The true self. That invisible observer. Is himself. Beyond any story. And so beyond any karma. But within him, this angelic being, there is a story recorded of several births, several parts. And that is why confusion takes place. When the soul starts to believe that he is the stories and the parts recorded within him. And so connection and the company of the Supreme Father, who's constantly shining light on this changeless truth of the being, awakens him to his changeless, storyless truth. And his vision creates space and distance between his eternal, changeless truth and that which is constantly changing. The stories. And it is here that the being experiences constant bliss. His changelessness and stillness in the midst of ever-changing stories.
And so the company of the Father acts like a magician and an alchemist's stone, which separates the gold from the alloy. Om Shanti. It's a very beautiful topic, and it is the topic of how karma, law of nature works. And I know it's probably not going to be the traditional way to see it, but albeit it's necessary to hear it the way God wants us to see it. And as we saw yesterday, that the company of the Father, the company of the Supreme Father, who's always in the waking reality, who's always aware that each soul has its own recording within it, who's always aware that the soul today, at this point, is under the hypnosis of its name, of its role, of its body. So he's very aware of all these things always. And so now we see that when he comes, he wakes up the soul. And he says that liberation in life is the game of a second. How? Only it's like a child sleeping and waking up in the lap of the mother. And when the child wakes up in the lap of the mother, the child can see all that he was dreaming himself to be, separate from his mother and separate from his own truth, was just a temporary dream. So it's like he's liberated in 1 second. Something very similar. So when Baba comes and Baba says, child, wake up. This whole entire passing show that is playing on this planet is just the unfolding of that karmic story which is recorded within you. It is like a movie script playing. So it's just something which is there, but it's not defining your truth. So it's just a personal story of each soul that is unfolding, and it's unfolding exactly as it should. So we will see how, when we see a spider's web, it's a beautiful work of art if we really see it from a distance. Yeah. And important attribute is that if the soul is seeing that spider's web from a distance, it's beautiful. But the moment you touch it, it becomes sticky, right? So something very similar. The soul is playing the part, and then there is a person part that the soul is playing. But if the soul starts to believe that this character's conceptual imaginary life is me, that is where the karma starts. That is where the greatest mental impression of all is believing oneself to be this person. And then we start suffering the story of the person. So the only way to disentangle from this conditioning of the web is to know that I am a soul playing a part, but I am not my part. So we will see how nature helps in that, laws of nature. And nature is a very wonderful friend of the soul,
because nature is the friend of truth. Nature is the friend of God. There are some invisible laws of nature, and these laws are constantly governing the physical world. And there's a constant blessing. हर एक aspect of nature के law में एक दुआ है, एक blessing है, जो कि दिख नहीं रही है, पर इनकॉग्निटो गुप्त रूप में एक दुआ की तरह काम कर रही है. So we will see how that works. अगर आपकी उंगली है, उसको कट आ जाता है, तो क्या होता है? कट आता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले blood comes out. ब्लड कम्स आउट. उससे भी पहले कुछ होता है? पेन होता है. हाँ, पेन होता है ना. उससे भी पहले पेन होता है. तो ये बहुत इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है नेचर का, पेन. क्योंकि अगर पेन नहीं होगा तो क्या होगा? पता भी नहीं चलेगा कब कट आया, कब ब्लीडिंग हो जाती है, एंड यू कैन इवन ब्लीड टू डेथ. You would not even know. So pain is a very intelligent mechanism of the nature. तो nature के अंदर 3 processes होते हैं: constructive, destructive and sustenance. आप देखेंगे नेचर में हर चीज, इवन बॉडी की जो सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स में भी आप देखेंगे every day new cells are being born, old cells are dying, and the ones which are being born are being sustained. तो ये रेगुलर बेसिस पे ऑल द टाइम नेचर में ये होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेंस, हर पल. फिर हम देखते हैं कि ये जो फिनोमिनन है पेन का, इतना फ्रेंडली फिनोमिनन क्यों है? हाउ इज इट दैट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, है ना? तो जैसे अगर हम फिजिकल बॉडी को देखते हैं, तो अगर रॉन्ग पोस्चर है तो इट विल क्रिएट पेन ना, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पेन. सो नेचर, अगर मैं अपना पोस्चर को ठीक करती हूं तो नेचर विल रिवॉर्ड मी विथ कंफर्ट, right? My body will feel comfortable if I correct my posture. Something very similar. The soul's original posture is that of constant love, constant peace, constant joy, constant bliss, constant power, and constant belonging to God. पर अभी आज क्या हो रहा है? क्योंकि आत्मा अपने आप को ईगो माइंड से आइडेंटिफाई कर कर बैठी है, तो उसका पोस्चर गलत हो गया है. वो आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग पोस्चर है. तो उस आइडेंटिफिकेशन की वजह से वो एक्चुअली में सफरिंग उसको कुछ अपीयरेंस में है, पर आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी वो उसको ऐसे लग रहा है कि वो सफर कर रही है, क्योंकि वो अपने आप को वो कैरेक्टर समझ रही है ना? तो जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को फिजिकली कोई लिंप कर रहा है तो हम इमीडिएटली उसको हेल्प करने के लिए भागते हैं, पर अगर कोई इमोशनली लिंप कर रहा है तो हम खुद भी उसके साथ लिंपिंग शुरू कर देते हैं, है ना? आज ऐसा ही होता है. तो अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम खुद किसी न किसी रॉन्ग पोस्चर में बैठी हुई है आत्मा. तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन. देयर इज इमोशनल पेन, देयर इज फिजिकल पेन, एंड देयर इज अ सिचुएशनल पेन. नाउ वी सॉ दैट ऑल पेन इज बेनेवलेंट. All pain is doing is being a very good server. What is this situational pain? Emotional pain तो सुना था, physical pain भी सुना था. What is this situational pain? Anybody? Frustration. Got it. Answer on chat. Anger. Anger, frustration. वो तो इमोशनल पेन हो गया. सिचुएशनल पेन क्या है? जब हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं कि सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट हैं या सिचुएशंस बहुत इजी हैं, रिएक्शन टू अ बैड सिचुएशन, yes it depends upon the situation. Yes, जब हम बोलते हैं it depends upon the situation,
तो हम सिचुएशन को इजी या डिफिकल्ट देखते हैं. So is situation easy, difficult, good, bad, neutral, or a blessing? What is a situation? दीदी, जब सिचुएशन हमारे अनुकूल होती है तो हम सोचते हैं कि इट्स अ गुड सिचुएशन, और जब हमारे प्रतिकूल होती है, हमारे अगेंस्ट में होती है, तो हम सोचते हैं इट्स अ बैड सिचुएशन. हाँ हाँ हाँ. तो अभी अगर आत्मा देखेगी तो उसको सिचुएशन क्या दिखेगा? If the soul is seeing a situation, it would be completely a blessing or neutral, right? Didi, it would be Yes, same Didi. like pain, right? Pain lets you decide whether you will bleed to death or not. So same ways, situation is also an alarm that whether it's good or bad does not matter. All you have to do is deal with the situation. So it's like it's similar to the analogy you taught us about pain and bleeding. Yeah, very good. So situations are there to help me see where is my posture incorrect, so that I can correct my posture. And law of nature is such that it's very impartial, just like God. It has no sense of partiality. So nature is not wanting to punish you. It's not sending bad situations or good situations. That's the interpretation of my own ego mind. Situation is just a situation. And it can be a blessing if it is the soul experiencing that situation, right? So if you have no understanding of law of nature, it doesn't mean that you will be excused. You can't be excused from it. Because if you, the soul, do not change your posture, then the change will be forced upon you. That's not something, a choice. So either you wake up through pain or you wake up through wisdom, right? So when I see the pain as a blessing, that is wisdom. When I see the pain as why, then it becomes suffering. Why me? So is that why sometimes you get repeated events, right? Like the posture is not correct, you keep on seeing this, like why me? That's sometimes people in the person consciousness, we ask that question, right? Why this is happening same thing happening over and over again and again. Exactly. And that is because my posture is incorrect. There is a signal coming, but I'm not listening. So if my posture I fix, then I don't need that pain. It's comfortable then, right? And that is why when Baba comes and tells us that this entire story, so it's so helpful. This knowledge really helps us really become so detached in a natural way without effort. Because what happens in Baba's company, it becomes very clear that I am this tiny star, but within me, there is a recording of 84 birds or however many birds. Now, this is like a computer game, as we saw yesterday. It's like designed, and all the 8 billion souls, their recordings are playing out on this planet. And it's like a whole beautiful computer game is created out of that, right? And the whole game is designed for me, the soul, in the beginning, when I'm really awake and enjoying the game, wonderful. At the end, when I forget that I am the player and I start thinking I am the character in the computer game, that is when it becomes a beautiful blessing that every scene and every recording of every character's part becomes a blessing for me, because everything is guiding me back to my essence. Everything is taking me back to my truth, which I have completely forgotten today. So the whole thing is designed just for the soul to have fun, and when it forgets, to remind it and bring it back to essence. That is why the whole game is designed. And the possibility of highest karma that we talk about is only possible when one really steps out of this scripted part and know himself beyond the story. Otherwise, highest karma is not possible. And we will see what does it even mean to do the highest karma? Who is the one who is doing the karma? If there's even the sense of doing, then I'm not even doing the highest karma, because then it's feeding the ego identity. So let us see how that works further. We'll give an example, because examples really help. And this example is very common for many of us. So I thought it would be very useful. So I guess situation is also a solution.
Situation is just simply a mirror. Situation is a mirror for the soul to see how and where am I in the wrong posture. That is all. Situation is not good or bad. It is my ego mind labeling it as good or bad, but it's actually simply a mirror. So what we are seeing here is that, let's say, for example, and in this, it is more like it's not always somebody else's part doing something to your part, but even you, the soul, your part could have offended somebody else's part, right? You could have said something through your part. In your part, there was something to be said that was insulting for someone else, or that was an action which is not in alignment with the nature of the soul. And you happen to perform that action through your part. What would you do in that case? I'm not even deliberately calling it a mistake. It's just an action not in alignment with your nature. And you means you, the soul, perform that action. What would be your next step? दीदी एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? Yeah. So let's say this is this person here and this is me, right? The soul. And in my part, Rini said something to Sally. Rini said something to Sally, and now Sally is feeling very offended, very hurt, and feeling very upset. How would you, the soul, so that you're coming from your highest karma, in this moment, after performing that action, how would you perform your highest karma? Because you just offended somebody, your words hurt somebody. How would you, the soul? Because I'm sure this is something many people are facing today, many souls. I would treat it as a situation, and I would treat it as a part of drama, and probably apologize if I think I did something wrong. Otherwise, I would just be neutral and would treat it as a situation that happened, and it just was a blessing. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. And others have said that they will apologize immediately. What would be the highest karma is first, This the one, soul. Yes. this one would check first what is going in the mind, whether the word sorry or something is just being spoken or it is meant. So this one will first check her own thoughts, and then she will, if it is if she is in right samriti, like she is internally feeling sorry for that soul, she would say. Otherwise, she would first correct her thoughts and then will come back to her and say sorry. Mm-hmm. Okay. And somebody else has asked that question. What if they don't accept your apology? What do we do next? Okay. What will one do is to perform the highest karma, I, the soul, first need to go back to my original smriti. Before even saying an apology, expecting an apology that should be I should be forgiven because I'm apologizing. No, I, the soul, will first go into my original state of being. And what is my relationship with that soul in the home of light? How is Baba seeing both of us in the home of light? Just seeing a scene of drama would not judge it right or wrong. Act was perfect for both souls. Yes. And then after seeing that act was perfect, I, the soul, will first go home. See myself through God's eyes, not through the eyes of the action performed. See the other soul also through God's eyes. And see how do we experience relationship with each other in the home of light. How is Baba seeing both of us? Is Baba seeing that we are angry or hurt, or Baba's just seeing it as just a part of the play, an act being played out?
Baba is seeing it just as an act being played out. But I, the soul, will experience immense love for myself from Baba and from myself first. And then I, the soul, will feel immense love from the other soul also. And I, the soul, am feeling immense love from me radiating to the other soul also. First, that smriti has to be cemented. It has to be first that awareness, because soul does not have past, present, or future. It was the past of the character, and the past of the character is not the identity of the soul. So, and neither is the present or the future. Past, present, and future, all three are reporting to the soul. Yes, somebody raised their hand. So दीदी कल आपने ऐसा ही कुछ समझाया था कि if something of this happens, we just treat it as God's situation, right? I mean, if something of this nature happened, I cannot dig myself as part of guilty too, right? It is more of part of drama which happened. I did not had bad intention, yet it hurt somebody. That does not mean I should be guilty of thinking and just cursing myself. That was also bad for that situation too, right? So I'll have to let it go as part of the situation. Like it. One is to let go of it as a person. And it's not really possible to let go, because ego will get involved as at a person level, right? And that is why we always go back to our seed stage, our eternal truth. And our eternal But that is where like in this case, I sorry, I was just missing my thoughts altogether. Let me recall that. In this case, like rather than talking to that person, why not let talk to Baba, and Yeah. then just visualize the thing. Because if we keep digging that thing into our own head, that would be radiating bad energy to that person, myself. So it's better to talk to Baba and and let him handle that rather than me handling. Yeah. But instead of handling and all, it is just that I, the soul, am with Baba, and our eternal scene is we are always with Baba. Souls are always with Baba. Souls are never not with Baba. So there could be an inner storm. Let's say it's not something that you did not do intentionally, you did it intentionally. And so there could be a storm of guilt and shame, and internally there could be a storm in your mind. But you will remember that I, the soul, did not change because of that action. Neither did that soul's love towards me changed because of that action. It could have been anything at the drama level. The story could play in many different ways, in many different scenes and scenarios. But I, the being, am forever changelessly with the Father, and our relationship in the home of light is also changeless. This truth I come back to. It's not a visualization. It is the eternal truth of our relationships in the home, regardless of how the act played out, which is why it's not just an imagination. It is the truth. This is why we are making a difference between imaginary reality and true reality. The play that it's playing out is an imaginary reality. The truth is what it is, the way Baba sees it, and the way Baba knows it, and the way Baba experiences it. And that is that we all souls eternally have explosion of love and explosion of respect amongst us, eternally, regardless of what's happening at the drama level. So there could be a storm in my mind. What have you done? This was very mean, and now see, they are hurt, and now you've created karma, and all of that could be coming. But I am the lighthouse. I am unshakable. I do not fall for the assumptions of my mind, for the presumptions of my mind, playing games. I stay as a lighthouse with my Father and experience that relationship of love with that Father. I'm creating the karma of the highest degree. And actually, this one has applied it when one had just come into Gyan.
and something had happened, and it was a past sanskara that took over, and the soul behind this character said something to somebody, and there was an immense storm for 2 weeks inside in the mind. But the being was with the father, experiencing super sensuous bliss whilst that storm is going on. The being did not try to meddle with the storm, change the storm, nothing. The being was just with the father, experiencing the truth. The storm was trying to pull many times, but the soul was not getting pulled. The soul was enjoying the company of the father and the company of those other souls also, that our perfect relationship can never be touched, can never be hurt in any way, regardless of what happens in the Mickey Mouse show. And the storm is still going on at the same time, but one is not taking identity from the storm. And this is very important aspect, because it's not really always as simple as it looks, because we have the ego mind, which is also doing its task of creating many emotions and feelings. But when I, the being, am in the lighthouse with my father as the lighthouse, then what happens is storms calm down after some time. But you, the soul, have really emerged your immense power of self-love in the midst of the chaos. And that's why we say that even the appearance of emotions of fear and anger, it is not a problem. In your mind, if there is fear coming up, there is anger coming up, see it as a blessing, just like the pain in the physical body was blessing when there was a cut. Even the fear and anger that is coming up in your mind is a blessing in disguise. And really begin to see it like that, because now it is a chance and opportunity for you to check, am I believing the story of my mind, which is creating feelings of guilt, shame, anger? Or am I so unshakable in my truth that God is still my reference point? God's perspective is still my reference point, and no human emotions have the power to define me, the soul. Because when Baba comes, he says that be the detached observer, be knowledgeful. And being knowledgeful means having the knowledge of your truth, having the knowledge of Maya, and having the knowledge of Baba, and having the knowledge of inner drama, which is Maya. Don't suffer your mind. Don't suffer your thoughts. Don't suffer the emotions. Don't suffer the feelings. You are not them. You are beyond it. So with Baba, we can see both. There are two worlds running parallel. We can see both very clearly and not get caught up in either. So you remain uninfluenced by the storms of Maya. Somebody's hand was raised. So, Didi, in previous example, the last one wherein somebody said something to Sally, the right answer is it's a blessing, and it is helping me to align my posture, or something else. Like, what is the right answer? Very good. The right answer is, can I detach even from the action that I performed, which was not in alignment with my nature? Can I detach even from that action? And first go to Baba, trying to fix something at the drama level. Can I first go to Baba, I the being, and see my eternal truth with him and our eternal relationships amongst all the souls that we have with each other that can never change? Can I first be my eternal reality rather than getting caught up in the storms of my mind, which will be there because this past sanskara will come, because intentionally means under the influence of my own old sanskara, I went out of alignment. I'm specifically not using the word mistake, but just went out of alignment. And that's okay. And that's okay. Can I immediately detach from the action and first stabilize in my eternal truth with Baba and eternal relationships with all the souls of the world? Nothing has ever changed. And now from that space, if there is a calling from within, that go and say sorry,
you will probably go and say sorry also, and no problem with that. But you will have no expectation from the other person's part to forgive your part. So you're not going there as a beggar that please forgive me, please forgive me. But because you internally truly feel that I, the being, was out of alignment in that moment. And so I, the being, apologize for being out of alignment. That's it. If they forgive, fine. If they don't, that's fine too. I have already gone beyond. I never held anything against myself. I'm beyond forgiveness. I don't need to be forgiven. I'm beyond it. I'm the tiny point of light who's beyond needing anybody's forgiveness. Even God says, I don't need to forgive you because I don't hold anything against you. Similarly, I, the being, don't hold anything against myself. So I don't need anybody's forgiveness. I, the being, am perfect regardless. But now I know what is the correct posture. So I come back to my correct posture. But there will be... Didi, in that situation, would Yeah. there be a scenario of like attitude wherein like now I don't care about anybody? I'm just like so obsessed with Baba that I don't care about any other human being. Would like how would you tackle Yeah. that aspect of the philosophy? तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. एक्सपीरियंस जो इसने किया है, जितना बाबा मेरी दुनिया है, आत्मा के लिए वो नेचुरल है कि बाबा आत्मा के लिए उसकी दुनिया, और उसमें क्या होता है, जो परमात्मा के अंदर प्यार है आत्मा के लिए, वो बहुत अनलिमिटेड है. तो मैं और ज्यादा केयर करती हूं. अब क्या होता है, मैं आत्मा अपने पार्ट को वापस नीचे बजाने आती हूं. और उस आत्मा से मैं, मान लीजिए जिसको साली को रीनी ने कुछ बोला, अब रीनी जाके उसको सॉरी भी बोलती है, पर वो सोचती कि नहीं मुझे माफ नहीं करना, मैं तो पकड़ के रखूंगी. पर मैं आत्मा, क्योंकि मैं परमात्मा के साथ अपनी रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसके साथ भी जो मेरा रिलेशनशिप है परम धाम में, उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मेरी जो उसके प्रति एटीट्यूड होगी, उस आत्मा के लिए मेरा जो प्यार होगा, अब वो एकदम अनकंडीशनल, एकदम, मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो मुझे कभी माफ करे भी. वो नहीं भी करे कोई बात नहीं, मैं तो अब आपके साथ मेरे ओरिजिनल पोस्चर से ही इंटरैक्ट करूंगी. आप माफ करो या ना करो, मेरा प्यार आपके लिए खत्म होने वाला नहीं है अब, क्योंकि मैं आत्मा जाग चुकी हूं. तो होता क्या है, इसने जो देखा है, सामने वाले भी होल्ड नहीं कर पाते ज्यादा ग्रज को, वो भी पिघल जाते हैं उस प्यार की एनर्जी में. और अगर मैं वो काम ना करूं, and I just start saying, I'm so sorry, I made a mistake. Now, until they forgive you, you won't feel better. And you will constantly be doing things to please them so that they forgive you. You actually end up becoming a slave. आप गुलाम बन जाते हैं ताकि वो मुझे माफ कर दे. उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको पर्सन लेवल पे उनको वो जो कह रहे हैं अच्छा भी वो और गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए और करते रहते हैं और करते रहते हैं. होता है ऐसे? किसी ने एक्सपीरियंस किया ऐसे? Yes. Of course, these situations like happens on real time basis, and so far without Baba Gyan, we were. I mean, at least I was in a illiterate state. But Yeah. post this session, I guess that is what it is. Like you don't or cannot live in the guilt and yet cannot, begging for sorry. You have to Exactly. move on and let Baba handle the situation for you. Like you don't even have to be the good actor. You just, leave it to your director. He will align the script and everything will fall in place. Like that's, Absolutely. I guess that is the right way to handle such situation. Exactly. So you are just being you now. You are just being unconditional love. ना आप beggar हैं माफी के लिए, ना आप उसके लिए उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं ताकि वो आपको माफ कर दें, और ना आप कोई
अंदर से इनर स्टॉर्म्स में कॉट अप हो रहे हैं, गिल्ट फीलिंग में कॉट अप हो रहे हैं, आप बिल्कुल अपने ट्रुथ में, सबसे पहला स्टेप ही होता है अपने ट्रुथ में चले जाना, अपने सच्चाई को एक्सपीरियंस करना, सबसे पहला स्टेप यही है। उसके बाद जो भी एक्शन होना होगा ड्रामा अनुसार अपने आप हो जाएगा। सॉरी बोलना होगा तो बोलना हो जाएगा, नहीं बोलना होगा तो नहीं भी बोलना होगा, वो अपने आप ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार होगा। मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें। इसलिए बाबा अपने आप, मैं आत्मा जब बाबा के साथ हूं, ये पर्सन नहीं कर रहा है, ये आत्मा कर सकती है। ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में इतनी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं आज। एक आइडेंटिटी, हर एक आइडेंटिटी का अपना एक जैसे पेड़ है, एक एक आइडेंटिटी का ट्री है। हर एक आइडेंटिटी की अपनी डिजायर्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी कंप्लेन्स हैं। एक आइडेंटिटी ईगो की दूसरी ईगो आइडेंटिटी से कंपीट कर रही है। तो हम जब इस पे एक्ट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम एक्ट करते हैं और फिर वो संस्कार पक्का हो जाता है। तो आइडेंटिफाई नहीं करना है, यहीं पर ही अंदर बाबा के साथ इंट्रोस्पेक्शन में आत्मा को अपनी लाइट हाउस की स्थिति से जो भी अंदर आ रहा है, बाहर कुछ भी एक्शन हो भी गया, मेरे मन के अंदर क्या तूफान चल रहा है उसको चेकिंग करके बाबा को सरेंडर। मेरी तो दीदी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एंड सिचुएशन इटसेल्फ इज अ सॉल्यूशन। सिचुएशन इज जस्ट अ ब्लेसिंग टू शो कि आपके अंदर कहां पे अभी तक पुराने संस्कार एक्टिव हैं। आप आत्मा के अंदर ईगो कहां कहां पर अभी तक छुपा छुपा के निकल छुपा हुआ बैठा है, जो आपको डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है ना, इसीलिए आपको एंजेलिक स्मृति एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहा है। वही एक क्लाउड है जो आपके और आपके ट्रुथ के बीच में है। वो है आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं हो रही है ईगो से और दिख नहीं रही है। तभी तो आत्मा फिर फ्लक्चुएट, तो आत्मा तो होती नहीं है, फ्लक्चुएट कौन हो रहा है? फ्लक्चुएट तो ईगो आइडेंटिटी हो रही है। ये रिनी आइडेंटिटी है जो एक ईगो से, स्पिरिचुअल ईगो दूसरे ईगो से लड़ रहा है, अंदर ही अंदर पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए आत्मा को 100% सारा टाइम क्यों नहीं ब्लिस महसूस होता? नहीं तो आत्मा तो अगर ऑब्जर्वर है तो सारे ईगो के गेम को देख सकती, पर उसमें फंसने की जरूरत नहीं है उसको। I, the soul, can experience my bliss regardless of what's happening in my mind. However many egos may be playing their game, but I'm not inside my mind. I'm outside of my mind with my Baba. So I can see Baba's light means that which was not visible is visible now. That is my own truth and Maya's truth, which is false. Maya is false and my truth is real. And now from my reality, I can see the falsehood of Maya with clarity. That's what happens in Baba's company. And that's when you are creating the highest karma. You're very aware, but you're not afraid of Maya. But you're very aware of your truth. You're paying a lot of attention, beautiful, effortless attention, but without any identification with Maya. You are acknowledging that, yes, this is my truth and this is non-self, but I am not engaging with this. I'm staying in my truth. I remember for those 2 weeks when there was a storm within for this soul, I was just engaging with my truth. I did not engage with the storm. I let Baba take care of it. I'm just engaging with my truth. I know, and within that, I had to really still perform my other roles, perform the role of a wife, perform the role of a mother, perform the role of a Brahmin. I'm still performing all the roles, but I'm, instead of choosing ego mind's feelings, I'm choosing my soul conscious feelings with Baba. So I can see the storm, but I'm choosing not to use those feelings. I'm choosing my truth to act upon. And so you start seeing within you, there are two parallel worlds that are going on. One of ego and one of your truth with Baba. And you can make a choice only when you are living your life in introspection, when you're truly living your life as just Baba, I, and my inner world of my or ego mind. What is it doing? Is it deceiving me, or is it just simply
I can simply see it and not be deceived by it. That is all. Outside situations are really immaterial, because even that which was supposed to be happening in the drama is what had happened in the drama. Now, what is the point? Because as a character only, I will look back at my past of the character. I don't need to go back to the character's past. मैं अपने ट्रुथ में, इटर्नल टाइमलेस ट्रुथ में हूं, जिसका ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है. आत्मा त्रिकालदर्शी है. ये हाईएस्ट कर्मा है. इसलिए बाबा को बोलते हैं सुप्रीम फिजिशियन. वो बोलता है सिर्फ अच्छा कर्म करने के लिए नहीं करना है, और कोई भी बैड एक्शन को ईगो जो है ना अवॉइड करता है ताकि कोई मेरे पार्ट को जज ना करे. तो इसलिए नहीं करना है कुछ भी बुरा कर्म, नहीं इसलिए नहीं करना है कि कोई मुझे जजमेंट ना करे मेरे पार्ट को. वो भी कहीं ना कहीं ईगो है. तो मुझे पूरी लाइफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस से ही जीनी है. और इसीलिए सिचुएशंस आती है लाइफ में, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो बहुत सटल होता है. बाकी ईगोस तो फिर भी दिख जाते हैं, स्पिरिचुअल ईगो देखने में थोड़ा सा, यू नीड द आई ऑफ द ईगल, यू नीड गॉड्स आईज. तो नेचुरल लॉज जो हैं वो बहुत स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट टीचर है, स्ट्रेट टीचर है. जो भी मेरे अंदर ईगोज है वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो वो सिचुएशन आएगी, मैंने ही इन्वोक की है वो सिचुएशन, ताकि मुझे वो दिखे अंदर क्या हो रहा है. मेरे अंदर कहाँ वो छुपा हुआ है ईगो, जो दिखे मुझे, क्योंकि दिखेगा तो ही मैं सरेंडर कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी. सो अपने पार्ट से डिटैच नहीं हो पाते. अपने पार्ट से अलग होकर ट्रुथ में कैसे टिकें, उसके लिए आत्मा को बाबा की नजर से अपने आप को देखना होगा. इसीलिए उसको सुप्रीम हीलर भी बोलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड स्टोरी, ओल्ड नैरेटिव का हमारे ऊपर जो असर है ना, वो बहुत डीपली हमने उससे आइडेंटिफाई किया हुआ है. तो बाबा का जो विजन है ना, वो आत्मा को उसके ट्रुथ में रखता है. और ये जितनी भी साइलेंट स्टॉर्म्स चलती रहती ना अंदर, जितने भी ये फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस जो ह्यूमन एक्सपीरियंस दे रहे हैं हमको, अब उस ह्यूमन एक्सपीरियंस से मुझे साक्षी होना है, मुझे डिटैच होना है. अब मुझे ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं, अब मुझे अपने एंजेलिक एक्सपीरियंस में रहकर ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन एक्सपीरियंस को साक्षी होकर देखना है. उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी है, तो ही पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. और ये जो है ना ट्रुथ, ये इसके ऊपर एक बहुत सुंदर internal factors inviting our external situations. This is Christina Figueres. She was sharing her experience with Sister Jayanti, a former executive secretary of the United Nations on climate change. And 1 second, let me, I forgot to get the her experience in her own words. And I will share her experience in her own words. Very beautiful experience, and it cleared many, many things. And in her words, she's saying, Paris Agreement, one of the toughest negotiations in the history of Convention on Climate Change between many different countries. At a very critical point in the negotiations, everything came to a full stop because of a victim-perpetrator dynamics. Some countries were feeling like a victim and saw other countries as perpetrators. तो हिंदी में बोलेंगे कि कुछ कोई अग्रीमेंट था, कोई कन्वेंशन का जो क्लाइमेट चेंज पे जो अग्रीमेंट था, उसके लिए ये क्रिस्टीना फिगेरस का पार्ट था, आत्मा का पार्ट था कि वो उस पे काम करे कुछ. तो कुछ कंट्रीज उसमें अपने आप को विक्टिम समझ रही थी, और कुछ कंट्रीज अपने उनको परपेट्रेटर्स, दूसरों को परपेट्रेटर का हिंदी में नहीं पता, पर परपेट्रेटर्स देख रही थी. तो the aha moment came in meditation class. How am I contributing
to this paralysis, to the victim-perpetrator dynamics that is stopping this agreement. तो इतने टाइम तो वो पहले बाहर उसका ध्यान था कि ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है. फिर उसने देखा कि मैं मेडिटेशन क्लास में उसको एकदम से रियलाइजेशन हुआ. उसने देखा मेरे अंदर, मन के अंदर क्या हो रहा है जो इसको स्टॉप कर रहा है, इस अग्रीमेंट को. तो उसने देखा आंसर केम वेरी लाउड एंड क्लियर व्हेन आई सॉ माई सेल्फ एज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ विक्टिम इन माई मैरिज and I am in my thoughts and in my word accusing my husband of victimizing me. तो वो उसने देखा कि उसके अंदर एक विक्टिम परपेट्रेटर की फीलिंग थी जो अपने रिलेशनशिप में फील कर रही थी बिटवीन उसके हस्बैंड और उसके बीच में कोई टेंशन चल रही होगी. तो उसको लग रहा था जैसे कोई उसका हस्बैंड उसको विक्टिम की तरह ट्रीट कर रहा है. और वो उसको ऐसे देख रही थी. So was fully convinced of this. It was I'm carrying my dynamics of victim perpetrator with me through my work, and the internal reality is with me all the time. I realized I'm taking that internal reality of victim perpetrator that I'm fertilizing through my belief in my thinking, through my belief in my tears, into my day job, not intentionally, but quite effectively, and spilling it all over the negotiations. I had to take an observer stance and realized my responsibility here is to not fix the situation, but to extract myself from the victim role and accusing the other of a perpetrator. And in as much as I did that cleaning up job myself, without blaming myself or the other, lo behold, there were fewer tomatoes that were being thrown, and today the issue is resolved. तो उन्होंने बोला कि इतना इंटरेस्टिंग है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने अपने अंदर देखा कि ये जो विक्टिम परपेट्रेटर की फीलिंग है वो अपने साथ हर जगह ले जा रही है, अपने काम पर भी उनके साथ वो जा रहा है. पर उसने वो देखा, उसको पता नहीं था कि वो अंदर चल रहा है. पर हमारे अंदर जो भी फीलिंग चल रही है और मैंने उससे आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वो आइडेंटिफिकेशन उसको रियलिटी बना देती है और वो रियलिटी फिर सब चीजों पर स्पिल होती है. हर काम मैं जो कर रही हूँ उसमें वो रियलिटी स्पिल हो रही है ना. So we tend to think my inner reality that I'm identified with is completely separate from the external reality. But our corrupted inner world is like a heavy backpack. We take it with us and dump it on whatever work and on whomever we are with. And you start seeing that you, the soul, have a very powerful lever and no one else has any control on it other than the self. तो मेरे साथ में ही जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, वो मेरे अंदर के किसी न किसी ईगो को अनआइडेंटिफाइड है, मैंने देखा ही नहीं है उसको इमर्ज करने के लिए आ रही, ताकि दिखे और मैं सरेंडर कर दूं. और जैसे ही वो सरेंडर होता है दिखकर, मेरे सामने से जो क्लाउड है ना, वो धीरे धीरे लाइट होते जाते हैं और फिर एक टाइम आता है क्लाउड्स बिल्कुल चले जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और आत्मा अपने ट्रुथ और रियलिटी में स्थित होकर ये सारा काम कर रही है. परपेट्रेटर मीन्स अपराधी. ओके, तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि हम आइसोलेशन में नहीं जी रहे हैं. मैं आत्मा अपने ट्रुथ में जितना जी रही हूं, तो उसका कितना सुंदर एक तरीका है कि जब मैं अपने ट्रुथ में जीती हूं तो फिर मैं कैसी वाइब्रेशंस अपने इंटरनल वर्ल्ड में भी क्रिएट कर रही हूँ. बाहर की बात छोड़ें, पहले अपने इंटरनल वर्ल्ड में मैं क्या कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रही हूँ आत्मा. व्हेन आई एम ओनली नोइंग माई सेल्फ एज अ कर्मातीत सोल who's not the part of the story, only and only then can I create the highest karma. Because now I am using the person is not using me. I'm using the mind is not using me. इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है. एक और, सूजन मान लीजिए, कोई है, किसी का नाम, कैरेक्टर
उसका आत्मा का कैरेक्टर है, उसका नाम सूजन है, उसको मनी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी, बैंकरप्ट हो जाती है, मनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि एज अ पर्सन she's giving importance, soul identified with Susan. Now Susan is giving importance and meaning to the resistance to this is a problem. What karma must I have done? I must have done some bad karma that this situation is coming to me. I should check what is happening within me. What have I done wrong? I must have done something wrong in my past. That is why this is happening to me. Is it the soul doing this work? No. No. Truth of drama, accurate and automated. Yeah. No. Yeah. It's not the soul doing the work. So instead, what can I do? Shine light on my truth. That money problem, if it's creating any feelings within my mind, I'm detached. At the same time, I'm also seeing my eternal reality of being most fortunate, richness of the soul, fullness of the soul in the home of light, the lucky star in the home of light with Baba. I, the being, has nothing to lose. I can never lose anything. If that is my inner reality, that I, the being, am seeing myself as that, and I'm seeing even this hopelessness and the human feelings of the fear and loss attitude of Susan or Rini in my case, I, the being, can see these feelings emerging in the mind of the soul that I am. But I'm not identifying with those feelings, but I'm identifying with my eternal fortune, with my eternal richness, with my eternal fullness, knowing that nothing can ever be changed in my truth. Then what will happen? That which I experience at the level of the seed, it may even start to manifest, but you will be beyond the influence of success and failure. It may start to manifest because you are experiencing your truth so fully. Drama will dance to the tune of the one who is living in his truth with the Father. But I, the being, has no desire to change drama in any way. Even if it doesn't happen, does happen, it doesn't bring happiness to me, or it doesn't bring me any sorrow. I, the being, am detached from the sorrow of the person. I, the being, am detached from the hopelessness of the person. I, the being, am detached from the worries of the person. I, the being, am in my innate sense of luck and fortune with my Father, feeling my truth and for eternity. And this too, So, this the end of the day, whole idea is to brighten your soul as much as you can, and nothing else matters, right? absolutely. I, the soul, shine light on my truth with Baba shining his light on my truth, experiencing my truth to the fullest, yet at the same time being aware of my inner world. Because if you're not experiencing it 100%, what did Baba say today in the Murli? If those who have studied the blessing, what was the blessing today? Detached and loving. Only when you're truly detached from your part, from your feelings of and the thoughts of a person, can you really experience the love of the Father and love for the self. If you're not experiencing 100% all the time, that means somewhere identity is being taken unknowingly, unconsciously from the ego mind. So that's why ordinariness is also a feeling. Ordinariness is being experienced. And then when you're experiencing ordinariness, what is happening? We just go along with that ordinariness. So personally, I really like to see Confluence Age as the time of living as a being with the Father in the eye of the storm. There's a constant storm going on in the mind of the soul.
whether it be in a form of a whisper, whether it be in an incognito form, whether it be in a ferocious form. It doesn't matter what is the form of that storm. But I, the being, am in the I, which means I am in my perfect blissful state with my perfect father and with my perfect family. Whilst I'm only an observer of the storm. Then you will see you are living blissfully all the time, not sometimes. That is again the person's karma. All the time. This is how soul behind, the founder of this institution, lived. We will see who he is tomorrow for the new ones. It's not like that soul did not have storms. There were immense storms in the mind of that soul. Every storm came to him first, and he used to say, it comes to make me more experienced, so that I can help you see the inner storms within yourself with detachment. So really knowing at this time, Baba and Maya both are together. Baba on one side, Maya on the other side. Maya is omnipresent. God is not omnipresent. So having this understanding itself will make you have love for the power of attention. आपको खुद को अच्छा लगेगा attention देना. आपको खुद को मजा आएगा attention देने में. बहुत enjoy करेंगे आप introspection के journey को. बहुत मजा आता है अंदर ही अंदर. क्योंकि बाबा का इतना प्यार महसूस होता है, क्योंकि बाबा को पता है that soul is just keeping this inner kingdom clean for me. और आत्मा को भी इतना अच्छा लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग डिसीव्ड, मैं धोखा नहीं खा रही हूं. So it's a very beautiful process. And if you call it process, I don't like to call it process, but it's a very beautiful way of being. और similar situations जैसे सिस्टर पहले बोल रही थी, वो आती रहेंगी जब तक वो ईगो फुली दिख कर मेरे सामने आकर फिर मर्ज ना हो जाए. तब हम उसको बोलते हैं फाइनल कर्मातीत स्टेज. पर अभी भी सोल कर्मातीत है. मैं कर्मातीत आत्मा इनर स्टॉर्म से डील करती हूं. पर्सन आइडेंटिटी इनर स्टॉर्म से डील नहीं कर सकती. मैं कर्मातीत आत्मा इनर स्टॉर्म्स से को फेस करती हूं. I, the soul, the karmatit soul, has the power to face the inner storms with my Baba. Then where is it that you are fluctuating? What is fluctuating? Who is fluctuating? Who's fluctuating? आवाज नहीं आ रही है. Ego mind. Yeah, ego mind is fluctuating. But if I have stepped out of the ego mind, am I fluctuating with the ego mind? Yeah, role is fluctuating. But if I have stepped out of the roles, thoughts, and feelings, and I know I'm none of those feelings, I can see them as a detached observer, then who is fluctuating? Soul's nature is not to fluctuate. Who is fluctuating? This is where the person karma is getting stronger. I am still somewhere identified with the person. Our man, yes. So don't be the mind, no? Can you not be the detached observer of your mind? Knowing who you are, it's very easy to be detached. But if you don't know who you are, then you will be in the storms with the mind. And this is what is happening on our planet today.
The whole world has become a Pompeii. Collective ego is increasing. And this collective identity with the mind is full of ego today, false identities. And we are invoking this response from nature. As we saw, we invoke situations unknowingly, unconsciously. So we are invoking from nature this response. So that is why there's a renewal force that is going around the world. I like to call it a renewal force. Baba likes to see it as a renewal force because the one who is free from the story of the person, who's free from the past and the present and the future of the person, the Trikaldarshi soul, can see now that the storms in the mind, if I'm not identified with, and those storms will become less and less. Similarly, I am contributing to the world's mind of peace. When I, the peaceful being, with my peaceful Father, ocean of peace, I am peaceful regardless of what is happening in the mind. I'm contributing to the peace of the world, collective peace. This is my highest karma. To live out of my mind as a being who's like the Father. I can watch unfolding of the karma and the drama of the personal story within me, the soul, but with detachment. It's all stories happening within me, right? Supreme Teacher Baba tells us 84 stories, 84 parts are recorded within you. So the storms are also recorded within you. So then why are you identifying with it? It's like always like to give this example of space, and the space has contents within it. I'm not the contents, I'm the space. So don't identify with the experiences that are taking place within you. You are the experiencer. You can observe any experience, even right now as one is speaking and listening. Can I watch the experience of the dance of ego also happening, whereas the dance of the angel is also happening, combined with the Father? And then at times the dance of the ego calms down and then it comes back up, but the dance of the angel never stops. So you're really living a life of being awakened. Yeah. And when we live our life like that with the highest potential, then nature will also give its highest side to us. And that we will see tomorrow. So knowing the inner attitude of my inner kingdom, I am the king. Mind is my subject. Mind is not my boss or my owner or my mind is not the king. I, the soul, am the king. And I belong to the King of Kings. And he, in his company, I learn how to have fun watching the games of Maya. Within my own self. Any questions at this time? So do we want to reflect nature to, nature is really our server. Nature is just reflecting and dancing to the tune of my consciousness, I the soul. If I the soul am in a godlike state, experiencing my godlike state, out of mind identification, out of the conditioned mind, nature wants to serve me. Trying to understand the game of Maya. Yes.
Is it a question, comment? Trying to understand the game of Maya? And actually, this is extremely important. What's the moral of today's lesson? What is the moral? What do you feel? What did you take from today's lesson? I would like to hear from you, then I will share. I would like, this is what I understood, and that's why I was asking from you. I mean, overall situation is a blessing, and detaching yourself from the body, let Baba handle the situation. That's what I take it as. What do we mean detach from the body and let Baba handle the situation? That's mind- why I was asking. I mean, overall, all I've understood today is situation is a blessing. Other than that, I did Mhm. not grasp much. Mhm. Okay, somebody saying detach from the situation. Yes, very good. Situation is a blessing. How about when you, the soul, is experiencing your truth in the home of light? Did it not get registered that my living in my truth with my Father in my eternal reality and keeping myself separate from the ego mind? Not living in my mind as the character, but living outside of my mind as a soul who's playing a character. In the story. Detach from your ego mind, be in your truth. Yes, absolutely. कुछ भी situation आ जाए, what is my truth, eternal truth? सबसे पहला step वो, जो मैं आत्मा का reality है, उसमें बाबा के साथ experience करूं. कैरेक्टर को परफेक्ट नहीं बनाना है, कैरेक्टर को स्पिरिचुअल नहीं बनाना है. आत्मा है ही स्पिरिट, उसको अपने ट्रुथ को एक्सपीरियंस में रहना है और उस ट्रुथ के एक्सपीरियंस में रहकर साक्षी भाव की प्रैक्टिस, बिल्कुल साक्षी भाव की प्रैक्टिस. आत्मा है ही साक्षी. जो भी इनर ड्रामा चल रहा है उसके फ्लक्चुएशन में कॉट अप नहीं होना है, बिकॉज दिस टाइम विद गॉड इज द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट, फन, not struggling with Maya, not getting caught up in the games of Maya mind. तब आप हाईएस्ट कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तब आप नेचर को भी सर्व कर रहे हैं, तब आपको नेचर भी सर्व करेगी, तब आप सारी सोल्स को सर्व कर रहे हैं. इसलिए बाबा बोलते हैं सीड स्टेज इज द हाईएस्ट स्टेज. जितना मैं अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहती हूं, डिजायरलेस, आत्मा डिजायरलेस है, जिसको सारी डिजायर्स दिख रही हैं ईगो माइंड की, पर उसको साक्षी होके देखती है और उस पर एक्ट नहीं करती. हाईएस्ट कर्मा ये है. और कोई बताएगा किसी को क्या समझ आया है? आप हाईएस्ट कर्मा कैसे परफॉर्म करेंगे? किसी ने हाथ उठाया है, सुजाता. यस. हमें हाईएस्ट कर्मा करने की कोशिश करनी चाहिए हर दम, ताकि हम अपने ईगो माइंड के साक्षी बनकर उसको देख सकते हैं. हाँ, तो हाईएस्ट कर्मा क्या है? अपने ट्रुथ में रहना, अपने ट्रुथ में रहना है, बाबा के साथ रहना है और साक्षी बन के उस सोल को हमें देखने की एनेबिलिटी देनी है, ताकि हम हमेशा ईगो माइंड में जो टसल हो रहा है वो दिखे हमें,
ताकि हम उसको प्योर लाइट दे। बस यही कर्म करते रहना है और इसकी कोशिश पहले होगी, जब जाके वो असली में मतलब असल में हम उस चीज को अटेन कर पाएंगे। एक्चुअल में कुछ अटेन नहीं करना है। आत्मा रीनी को देख रही है, रीनी आत्मा बनने की कोशिश नहीं कर रही है। ट्रू ट्रू। ये बहुत फर्क है दोनों में। अगर ये चीज आपने कैच कर ली ना आज, तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रू, वेरी मुझे ट्रू। परफेक्ट बनना नहीं है, मैं आत्मा परफेक्ट हूं जो इम्परफेक्ट पार्ट को परफेक्ट, यस एंजॉय कर रही। यस यस। हाँ साक्षी। Yeah. Om Shanti. I've done the course before. Can I still participate? I mean, Yeah, sure. when you question. Yeah, sure. Okay. I think what I've gathered from today's session is being with your true self and being with Baba. I think it's very effortless. You're not even trying to handle the situation. You know, when we are in that ego identity, we are trying to find the solution and handle the situation. But here we just have to pay attention and be in our true self with Baba. Rest, everything is being taken care of. Very So good. I think that's the most important thing. Just be with Baba and that's it. Yes, absolutely. Absolutely. In your truth, drama has its fixed script. It will play out according to its script. My concern is never on the outside world. My only attention is who am I with my father and being aware of what's happening in my inner world. That is all. Yes. Anyone else would like to share? It's important that you share so that it becomes clear for yourself. जी दी, जो मैंने समझा कि अपने इटर्नल ट्रुथ के साथ बाबा के साथ बैठ के अगर मैं अपने माइंड और बॉडी की जो एक्शंस हो रहे हैं उनको अगर मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली, तो ये अकर्म बन जाता है। मैंने ये अवेयरनेस। हाँ जी, नहीं, आप फिनिश करें जो बोल रहे थे। हाँ जी, यही बोल रहा था मैं कि अगर इस कॉन्शियस में है तो हम मेरा जो कर्म है वो सारा अकर्म में चला जाएगा। और जो कर्मा को जो मैंने समझा जस्ट ड्रामा के लिए कॉन्सेप्ट, एक जस्ट कॉन्सेप्चुअल लॉ है, कोई वैसा ऑपरेट होने वाला कोई लॉ नहीं है। अगर मेरा माना है, अगर कॉन्शियसनेस मेरा इट्स डिपेंड ऑन कॉन्शियसनेस एक्चुअली। हाँ, कॉन्शियसनेस मेरा ट्रुथ में है, then it's become like a karma. Yeah, most elevated karma also we can call it, which is beyond sukarma and vikarma. Most elevated karma, because I, the soul, am creating karma with God. God is not creating karma with me. I am creating karma with God. Okay. And when I create karma with God, I surrender. The use of my body will be for his task. The use of my mind will be for his task. The use of everything will be for God's task. Then I am creating the highest karma. I, the soul, when I wake up, then every breath I breathe is the highest karma through this body. मैं जागृत मोमेंट्स जो है, मैं आत्मा जब जागृत होती हूँ और अपने ईगो माइंड से साक्षी रहती हूँ, तो मेरी एक एक श्वास हाईएस्ट कर्मा है इस बॉडी में। क्योंकि आत्मा पहचान जाती, मैं मुझ आत्मा का कोई नाम नहीं है, मुझ आत्मा का कोई, मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं डूअर भी नहीं हूँ, मैं नेमलेस हूँ, मैं आइडेंटिटी लेस हूँ,
मेरी आइडेंटिटी ये है, मैं परमात्मा का बच्चा हूं और मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और फिर उस स्मृति से जब मैं आती हूं एक्शंस परफॉर्म करने, मेरा जो इनेट ब्लिस, इनेट जॉय है, वो हर एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। कोई भी एक्शन दे दें करने के लिए, आई एम नॉट टेकिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम एक्शंस आफ्टर दैट। आई एम नॉट टेकिंग माई जॉय फ्रॉम एक्शंस आफ्टर दैट or the outcome of the action. Because I am innate joy, bringing my joy to every action, every scene, every thought in the mind. I am giving my joy to my mind. आत्मा के सारे अकाउंट्स से उसने अपनी गलती में, अपने भूल भुलैया के खेल में जो खेल खेला उसने, 63 जितने भी जन्म उसने खेला भूलने का गेम, वो सारे अकाउंट्स एक सेकंड में सेटल हो जाते हैं। एक सेकंड वो वाला है जो इटर्नल मोमेंट है। बस उस स्मृति में रहकर मुझे खेल खेलना है कि मैं परमात्मा के साथ बाप समान आत्मा। माया कुछ भी बोल ले, कितना भी नीचा गिराने की कोशिश कर ले अपने संकल्पों के द्वारा, माया मन, मैं आत्मा अपने आप को टच होने देती नहीं। इतनी पावर है आत्मा में परमात्मा के साथ। उसको हम कहते हैं ट्रू वैष्णव। आत्मा कभी इम्प्योर फील नहीं करती, चाहे कैसा भी संकल्प आ जाए माया मन में, माया कैसा भी संकल्प ले आए, मेरी प्योरिटी को कोई टच कर सकता नहीं। तो वही दीदी जो आपने स्टार्टिंग में कहा ना, पोस्चर का, जो बॉडी के पोस्चर को तो हम लोग देखते हैं, लेकिन जो मैं आत्मा हूँ, मेरा पोस्चर कैसा है, मैंने उसको ठीक रखना है पोस्चर। बस हमें अपने मन को देख के लंगड़ाने की जरूरत नहीं करनी। मन लंगड़ा रहा है ना, तो उसको ठीक करना है। जी जी। तो जो भी सिचुएशन आती है वो हमारा पोस्चर ठीक करने के लिए आती है। वेरी गुड। एंड हमें अपने को बाबा की नजर से देखना है और फिर रोल में आना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बार में नहीं होगा। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ हिट, वन टाइम हिट, बस एक ठक हुआ और सब आ गया। इट इज एन अटेंशन, इट्स अ गेम ऑफ अटेंशन। आप अगर चाहो तो एक हिट में कर सकते हो, वो भी मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगी, पर इसने जो देखा है अपने लिए भी एक हिट में पॉसिबल है। आत्मा को क्लियरली माया हर टाइम दिखती है, इसलिए धोखा नहीं खा पाती है, एक्शन में नहीं आती। स्मृति और स्मृति का खेल है, मतलब स्मृति होनी चाहिए हर हर वक्त, अटेंशन है तो फिर ठीक है, अदरवाइज जहां विस्मृति हुई तो एक्सीडेंट हो गया। हाँ, और एक्सीडेंट भी मान लीजिए हो भी गया, एक सेकंड में बाहर आ जाए, क्योंकि आपका ट्रुथ नहीं बदला। ट्रुथ बदला आपका? आत्मा का एक्सीडेंट में कुछ होता है? नहीं, ट्रुथ नहीं बदलेगा। जी जी। आप चेंजलेस हैं, तो आपका ट्रुथ बहुत सुंदर है। हो भी गया, वो भी ड्रामा का पार्ट था। इस सेकंड में मैं कौन हूं? और ये रिपीटेडली आपको इसको अनुभव में लाना होगा। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइलेंस की प्रैक्टिस। सुबह और शाम एटलीस्ट आधा घंटा सुबह और रात को सोने से पहले साइलेंस में आप आत्मा, और दिन में कई बार साइलेंस में आत्मा बाबा के पास बैठकर, हमें बिल्कुल भी मन के संकल्पों को चेंज करने की मेहनत नहीं करनी है। नहीं तो क्या होता है, थॉट आता है और फटाफट जो स्पिरिचुअल ईगो होता है ना, एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करने की मेहनत करता है। अरे अरे ये थॉट ठीक नहीं है, इसको चेंज करो, सप्रेशन हो जाएगा। पहले चेक। हाँ जी,
पहले चेक करें ये कर कौन रहा है। क्या आत्मा कभी डिस्कम्फर्ट फील कर सकती है? नहीं। तो फिर ये डिस्कम्फर्ट कौन फील कर रहा है? दूसरे थॉट को देख के। ये एक ईगो दूसरे ईगो को देख के अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। एक ईगो दूसरे ईगो को सप्रेस कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये बहुत गहरी बातें हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और जो बिगिनर्स हैं, take as much as you can. Is there still anybody who is still the first time? Would like to hear from them also, if I think possible. Kamal ji is the one I see in the list, and Archana ji is also there. And yeah, Sagarika is also first timer. Yeah. Okay. So understand, this is something, more you pay attention, more you listen to, it becomes very natural and easy. Because it is easy. It is about who you already are. You're not becoming something that you are not. You are always this divine being of light. And forever, just the clouds are obscuring your truth and you're believing yourself to be that cloud. That is all. But learn to see yourself as that sky, which can never be touched by the clouds. That is- Sister, can you elaborate more on that point? Suppression and, I mean, more on that point. I didn't get Yeah. the difference. Yeah, Ego, sure. that is the spiritual ego trying to deal with the ego. I mean, what was that? With other egos in the mind. Today in the mind, there are many, many false identities, right? Let me see if I can go back to that. Today in the mind, yeah. Today in the mind, there are many, many false identities, right? And one of the biggest false identities is the spiritual ego. Yeah? वो है spiritual ego, जो सबसे बड़ी false identity है. अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने ज्ञान लिया, तो ज्ञान सुनता कौन है? ये कैरेक्टर आइडेंटिटी ज्ञान सुनती है. जब ये कैरेक्टर आइडेंटिटी ज्ञान सुनती है, तो फिर वो सुनती है बाबा ने कहा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से का संकल्प भी नहीं आना चाहिए. बाबा ने कहा है कि दुख, हर्ट की फीलिंग नहीं आनी चाहिए. पर बाबा ये भी कह रहा है कि माया के तूफान तो अंत तक आएंगे. तो इसका मतलब क्या है? ये सुनता कैरेक्टर है, उसको समझ नहीं आता है. तो जैसे ही गुस्से का थॉट आता है, तो ये स्पिरिचुअल ईगो दूसरे ईगो को दबाने लग जाता है. अरे बाबा ने बोला गुस्सा नहीं चाहिए, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है. चालू हो जाता है ज्ञान का पॉइंट देने उसको. वो भी ठीक है, शुरू शुरू में वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि शुरू शुरू में और कोई तरीका नहीं है हमारे पास. तो शुरू शुरू में आप जरूर वो प्रैक्टिस करें. पर एक टाइम आता है जब मुझे जागना होता है कि मैं हूं ही एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, मैं ज्ञान का स्वरूप हूं. और मैं आत्मा जो ज्ञान का स्वरूप हूं, मैं गुस्से को भी देख सकती हूँ जो कि एक संकल्प के रूप में आ रहा है, और मैं वो भी ईगो देख सकती हूँ जो उसको दबाने की मेहनत कर रहा है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है. वो ईगो को देख के, वो संकल्प को देख के इस ईगो को अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों आ रहा है. तो ये दोनों को मैं देख सकती हूँ, वो आत्मा में हूँ. रिएक्शन टू द रिएक्शन ऑफ द माइंड, आई कैन सी बोथ, वो आत्मा में हूँ. क्योंकि आत्मा रिएक्शन लेस होती है. आत्मा कभी भी, इसमें संस्कार, आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है वो डिस्कम्फर्ट का नहीं है. आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है रिएक्शन लेस. तो मैं जितने भी रिएक्शंस है माइंड में, सारे देख सकती हूँ साक्षी होकर बाबा के साथ. और इसके लिए जितना आप साक्षी रहेंगे ना बाबा के साथ, मन को साक्षी होकर देखेंगे, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी के बाद तीसरी, सब कुछ दिखेगा. मैंने सोचा नहीं था इतना एडवांस्ड लेवल पे आपके साथ शेयर करूंगी, बट क्लियरली इट्स इन द ड्रामा एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग इट.
So to understand कि ये सारे assumptions, projections, interpretations, ये सारा कुछ माइंड में हो रहा है, आत्मा सिर्फ साइलेंट विटनेस है, इस सब की साइलेंट विटनेस। तो जब मैं उसको साइलेंटली विटनेस कर सकती हूँ, तो मुझे दिख रहा है मेरा माइंड अज्यूम कर रहा है कि अभी मैंने उसको ये बोला, फिर वो मुझे ऐसा बोलेगी, ये ईगो माइंड ही बात कर रहा है अंदर ही अंदर रीनी के भान में। मैंने उसको ऐसा कहा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ये सारा ईगो माइंड कर रहा है अंदर ही अंदर। अब मैं आत्मा उसको ऑब्जर्व करती हूँ, ये सब ईगो माइंड का खेल चल रहा है। मुझे तो पता है हम सब आत्माओं का रिश्ता परम धाम में प्यार का है, तो ये सारे संकल्प किसके हैं? ईगो माइंड के। ठीक है, वही खत्म हो जाते हैं, देखते ही खत्म हो जाते हैं। क्लियर हुआ ये? What does it mean? One ego suppressing other ego? Yes, sister. In fact, just realize it's going a step even further, wherein you're seeing both the egos. You know, even वो spiritual ego जो बहुत easily slip in हो जाता है, पता ही नहीं चलता. हाँ, So it's going one step more deep down. या बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, तभी आत्मा अपनी कांस्टेंट ब्लिस को एक्सपीरियंस कर पाएगी। नहीं तो ये, नहीं तो ये ईगो, ये नहीं तो ये ईगो, कुछ ना कुछ तो कवर कर ही रहा है। मुझे पूरे के पूरे माइंड से बाहर निकलना होगा। मैं थॉटलेस आत्मा सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो टेम्पररी हैं, जो फ्लीटिंग हैं, जो टाइम बाउंड हैं, उनको देख सकती हूँ एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एज तो अ ये साक्षी। पार्ट एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे वापस? क्या चीज? द स्पिरिचुअल ईगो, जैसे आपने बोला कि हाँ स्पिरिचुअल ईगो बोलता है, हाँ, जो एक बार स्पिरिचुअल ईगो होता है ना, दे कॉन्स्टेंटली ये कैरेक्टर जो आइडेंटिटी है ना, जैसे इन माय केस स्पिरिचुअल रिनी को बस सारा टाइम रिनी सबको अच्छी लगे, रिनी को सब पसंद करें, उसके लिए मैं एक्शन सबको खुश करने के लिए करूंगी। तो सारा टाइम मेरे एक्शंस जो होते हैं ना, रिनी को अच्छा दिखाने पे होते हैं, स्पिरिचुअल दिखाने के लिए। तो आत्मा को वो जो स्पिरिचुअल ईगो होता है ना, फिर उसको वो दूसरे वाले ईगो अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो सारा टाइम उसको ज्ञान पॉइंट दे के चुप कराने की मेहनत करती है। बहुत मेहनत लगती है सारा टाइम, पर वो कोई बात नहीं, शुरू शुरू में वो भी जरूरी है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। पर थोड़े टाइम बाद जब वो माइंड थोड़ा काम डाउन होना शुरू हो जाता है, थोड़े सा बादल छंटते हैं, फिर अब आप अपने आप को पहचानने भी लगती हो आत्मा, तब अब आपके लिए बहुत जरूरी है आप माइंड से बिल्कुल बाहर आ जाएं, और ईगो माइंड के एक एक ईगो को आप साक्षी होके देख रहे हैं। सारे ईगो दिखते रहेंगे आपको, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर आपकी स्थिति नहीं हिलेगी, आप बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे, चाहे कितने भी फॉर्म्स ऑफ ईगो आ जाएं। नंबनेस भी आती है, वो भी आ जाएगी, पर आपको टच नहीं कर पाएगी। ईगो रियल क्यों लगता है? क्योंकि वो बॉडी के फॉर्म में, वो इमोशन बॉडी में सेंसेशन के रूप में फील होता है, इसलिए वो एंगर रियल लगता है, क्योंकि वो सेंसेशंस में भी फील हो रहा है, माइंड के सेंसेशंस में भी फील हो रहा है, तो वो रियल लगता है। पर एक्चुअली कोई रियलिटी नहीं है ईगो में। ईगो फॉल्स है, ईगो सिर्फ एक थॉट है, बस इतनी रियलिटी कि वो एक थॉट है, उसके बाद सब झूठ। बस मैं आत्मा उसको बिलीव करती हूँ और वो थॉट का रूप में बन जाती हूँ, फिर उस पर मैं एक्ट करती हूँ और वो मेरा फिर फॉर्म बन जाता है और संस्कार डीप हो जाता है। You mean you're not supposed to change your wrong thoughts, बस डिटैच रहना है। हाँ, क्योंकि चेंज कर कौन रहा है उस थॉट को? आत्मा की कैरेक्टर, स्पिरिचुअल कैरेक्टर। पहले स्मृति ठीक हो, चेंज तो अपने आप हो जाते हैं थॉट्स, क्योंकि मैं आत्मा एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज हूं, तो थॉट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। मैं मतलब आई एम सोर्स ऑफ नॉलेज combined with my supreme father who's the ocean of knowledge. So with him, the moment I see the thought, I see the
lifelessness of that thought dissolves. Because I know from my truth, nothing about the ego mind can define me. I know I am peace. There's a thought of anger, but that thought is limited, fleeting, time-bound, and my peace is eternal. So from my eternal state of peace, I'm seeing the thought of anger. It looks like a joke. It does not look real. It does not look like me at all. मजाक लगती है माया, एक चूहे बिल्ली का खेल लगता है माया. बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं, चूहे बिल्ली का खेल लगता है ये माया. तो अपनी स्मृति सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबा के साथ. फिर देखें खेल आ रहा है जा रहा है, मन में बहुत कुछ आ रहा है जा रहा है, उसमें एक एक को चेंज करने बैठेंगे तो कितना चेंज करेंगे, थक जाएंगे. तो जब बाबा बोल रहा है चेक एंड चेंज, बाबा बोल रहा है अपनी स्मृति को चेक एंड चेंज, थॉट को नहीं. पहले अपनी स्मृति चेंज करो तो थॉट अपने आप चेंज हो जाएगा. कैरेक्टर इस आइडेंटिटी को देख रहा है, या वो आत्मा जो कभी भी रिएक्शन नहीं करती है, रिएक्शनलेस थॉटलेस आत्मा थॉट को देख रही है. ये चेक करें आप. क्लियर हुआ ये? अच्छा, अभी हम यहाँ पर आपके और कोई अगर क्वेश्चंस हैं जो नहीं आंसर हुए हैं, इज इट ओके हिमा, सिस्टर हिमा, इफ दे सेंड दोस क्वेश्चंस टू यू? Yeah, sure, Didi. Definitely. Okay. Yeah, again, I'm sharing the number. It is just a link. The moment you guys click on this link, it will take you to the WhatsApp. You don't have to save my number and contact me. So just click on this link. ऐसा कोई है जो चैट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या जिसको नंबर चाहिए और नहीं मिल पा रहा है? Sister, this is Priya this side. ये link access नहीं कर पा रही. Is it okay if I text you or send my Yeah, number? To sure. how Yeah, it works? Yeah, that's fine. You can whatever way you want to reach out to me. That's fine. So if everyone can send if those questions that have not been answered to Sister Hema, and then we'll do our best to answer all the questions. But thank you very much for your invisible presence. Really appreciate it. And we'll take just 1 minute of silence and really experiencing the true being that I am from the eyes of God. Don't use the eyes of your mind or the eyes of your thoughts to see yourself. Don't combine with the mind, combine with God. And this tiny point of light that I am, combined with God, knowing myself as God knows me, as a being who is selfless, benevolent, reactionless, storyless, timeless, changeless being. My beauty and truth can never change as a soul. That being that I am, regardless of what the ego mind does, says, or not say, but just silently whispers, regardless of what's happening in the ego mind, my truth is unpolluted, uncontaminated, untouched. Know yourself as this unpolluted being that can watch the pollution of the mind without being disturbed, can watch the disturbance of the mind without being disturbed, can watch the fears of the mind fearlessly, can watch all the assumptions, presumptuous stories of the mind storylessly.
Know yourself as that tiny point, the experiencer of the mind, but not the mind. This is how Baba sees me. And this is why he is here, to separate the truth of who I am from that ignorance and falsehood of Maya's world in my mind. It's very easy to be you. It's natural and normal to be that constant, peaceful, blissful you. All you need to do is accept God's vision for yourself and how he sees all the eternal relationships with all the souls that you have in the home of light. The rest is all just a play, a fixed script playing out. Om Shanti. Om Shanti.